students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying ratio analysis, accounting ratios. उसमें आज हम पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, एक ही नेम है तीनों का। तो क्विक लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो which measures the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligation. मतलब within the year हम पे कर पाएंगे ना नहीं. Obligations, that is current liabilities from its most liquid current asset. तो ये जो वर्ड है ना most liquid current asset, ये current asset से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ने के बाद बाकी जो asset रहता है that is most liquid current asset. It enables the relationship, it establishes the relationship between liquid assets and current liabilities. So liquid asset ratio is the relationship between liquid assets and current liabilities. The formula is liquid or quick ratio is equal to liquid assets or quick assets upon current liabilities. इसका कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. इट इज लिक्विड और क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज. ये फॉर्मूला होता है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्योर रेशियो, से 1:1, 3:1, 2:1. क्विक और लिक्विड एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है? पहले क्विक और लिक्विड एसेट्स क्या होता है? एसेट, लिक्विड एसेट्स आर द करंट एसेट्स. लिक्विड एसेट्स में लिक्विड एसेट्स आर द करंट एसेट्स. दे आर नाइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नॉर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. इस फॉर एग्जाम्पल आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स. ये सारे एकदम मोस्ट लिक्विड एसेट एकदम कैश के नज़दीक होते हैं. दे आर शोन अंडर द हेड करेंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट एंड इंक्लूड. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? लिक्विड एसेट, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट. ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ें होता है, bills receivable and debtors minus provision for doubtful debts, cash and cash equivalents, short term loans and advances given by the company, other current assets except prepaid expenses. तो इसमें current liability क्या होता है? current liabilities are the liabilities repayable within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the balance sheet. balance sheet का डेट से ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे होता है. they are shown under the head current liabilities in the balance sheet. balance sheet के current liability head में दिखाया जाता है. they include short term borrowings, bank overdraft, cash credit, current maturities of long term debts etc. ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल और सॉन्ड्री क्रेडिटर्स. अदर करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट D1 borrowings, interest accrued and D1 borrowings, outstanding expenses, unclaimed dividend, calls in advance etc. and short term provisions. ये होता है. आज पर CBSE गाइडलाइंस सर्कुलर नंबर this dated this accounting treatment of other current assets is restricted to prepaid expenses, accrued income and advance tax liability only. So then quick or liquid or quick assets are the assets which are either in the form of cash and cash equivalent or can be converted into cash within a very short period. They are most liquid asset. जो asset एकदम तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट. Inventories and prepaid expenses are excluded from liquid assets because it takes time
before inventory can be converted into cash, while prepaid expenses are expenses paid in advance and hence cannot be converted into cash. हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो वापस पैसा नहीं मिलता, इसीलिए वो कैश में कन्वर्ट नहीं पाएगा। और इन्वेंट्री को बेचेंगे उधार पे, फिर वो बिल देगा, फिर उसके बाद वो चेक देगा, फिर वो कैश और बैंक में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये दोनों मोस्ट लिक्विड एसेट नहीं है। डेटर्स आर टेकन at a net of a provision for doubtful debt because that much amount is not likely to be recovered. डेटर से प्रोविजन पर डाउटफुल डेट इसीलिए माइनस होता है क्योंकि इतने पैसे हमें रिकवर नहीं हो पाएगा, नहीं मिलेगा। आइडियल लिक्विड रेशियो क्या है? आइडियल लिक्विड रेशियो होता है क्विक रेशियो ऑफ 1:1 इज ए जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिंस फॉर एवरी रुपी ऑफ अ करेंट एसेट लायबिलिटी देयर इज ए रुपी ऑफ अ क्विक एसेट। 1 रुपये उधार के लिए 1 रुपये क्विक एसेट रखा हुआ है। इन केस ऑफ लिक्विड रेशियो इट इज लेस देन 1, इट मीन्स दैट करेंट लायबिलिटीज आर मोर देन इट्स लिक्विड और क्विक एसेट्स, जो कि डेंजरस सिचुएशन है। एज ए रिजल्ट द एंटरप्राइज मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है ये कंपनी पे नहीं कर पाएगा। And current liabilities, if they fall due for payment on that date, उसी दिन अगर ड्यू के लिए पेमेंट के लिए फॉल ड्यू नहीं होता है तो पे नहीं हो पाएगा। Then objective and significance. The objective of a computing liquid ratio, quick ratio is to assess whether the enterprise would be able to meet its immediate short-term financial obligation, current liabilities as and when due. Thus the quick ratio is a better indicator of liquidity. एकदम इमीडिएट पेमेंट के लिए क्विक रेशियो एक बेटर इंडिकेटर होता है लिक्विडिटी का। डिफरेंस बिटवीन करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहले करेंट रेशियो देन लिक्विड और क्विक रेशियो। फास्ट होता है आपके, तो ये बेसिस में रिलेशनशिप current ratio, it establishes the relationship between current assets and current liabilities. current ratio current asset और current liability relationship बताता है। and quick ratio में it establishes the relationship between liquid और quick assets और acid test asset and current liability, इनके बीच में relationship बताता है। assessment में it assesses the current ratio में current ratio assesses the liability of an entity to meet its current liabilities within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the balance sheet. जो है राजा लिक्विड एसेट में लिक्विड रेशियो में it assesses the ability of the entity to meet its current liabilities immediately, तुरंत, ये पूरा साल नहीं लेता, तुरंत, आज मतलब आज पेमेंट करो। देन थर्ड होता है आइडियल रेशियो, 2:1 इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल रेशियो, और लिक्विड रेशियो में होता है 1:1 इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल रेशियो। मेजर, इट इज नॉट considered to be better than liquid or quick ratio to measure short term financial position. It is not considered to be better, ये क्विक और लिक्विड रेशियो से बेटर नहीं है। बेटर होता है क्विक और लिक्विड रेशियो जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बेटर तरीके में मेजर करता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन करेंट रेशियो टू मेजर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये करेंट रेशियो से बेटर होता है। सुइटेबल, बढ़िया किस चीज़ के लिए? करेंट रेशियो इज मोर सुइटेबल व्हेन गुड्स आर फास्ट मूविंग, जिस टाइम गुड्स जल्दी बिक जाता है, फास्ट मूविंग होता है, आया और बिक गया, तो उस टाइम करेंट रेशियो इज सुइटेबल। व्हेयरएज लिक्विड रेशियो में इट इज मोर सुइटेबल व्हेन गुड्स आर स्लो मूविंग, जिस टाइम स्लो चीज़ें बिकता है उस टाइम लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो इज मोस्ट सुइटेबल। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन करेंगे। तो टुडे वी स्टडीड लिक्विड रेशियो।